Hello everyone, a very good evening to all of you. My name is Rakhi and I welcome you all to Guidely. Well, session थोड़ा सा delay हो गया, so sorry for that. And अभी quickly start करते हैं. So if you are here watching live, kindly share this session with everyone, with your friends and whoever is waiting for IBPS PO descriptive exam, because this is going to be really very important. आज क्या बात करेंगे? We'll talk about the most important, most expected and the previously asked topics in IBPS PO exam. ठीक है? So whether we talk about SBI PO or IBPS PO, see, for both the descriptive exams, we all know. Wait a second. Yes, it's working perfectly fine. So for both these exams, it's very important for us to know that what is the trend currently, right? So if we know the right trend, it will be easy to practice. So paid batch आप लोगों को already मिल रहा है. I hope you are learning from there. You are getting all the techniques, all the formats, all the rules, some important things. Well, this is the session that what you need to practice on. Hello Meti, very good evening. Please share the session with everyone. Do like if you love the content, if you love the effort. Before that, very important point. See, अब इतना टाइम नहीं है ना, अभी पता है क्या करना है, लाइक लर्न करते रहो कॉन्सेप्ट्स को वीडियोस से, ठीक है? इस टाइम पे ना रीडिंग बहुत जरूरी है. सी, द मोर यू रीड द मोर नॉलेज यू विल गेन, ठीक है? तो इस टाइम पे रीड करना बहुत 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 जरूरी है. सो लेट्स एनालाइज द प्रीवियस ईयर टॉपिक एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन पे सबसे ज्यादा आपको आपका एग्जाम देखने को मिलेगा. सो इफ आई टॉक अबाउट दीज टू कि लाइक किस पे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इन दोनों ही एग्जाम्स में कंटेंट बहुत ज्यादा सिमिलर होता है. ऐसे का मतलब पहले होता था, अभी तो जो एसबीआई का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है ना. इन दिस पैटर्न नाउ यू सी कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे अभी ऐड हो गई हैं, बट पहले जब बस ऐसे और लेटर आता था तो उस टाइम पे क्या होता था ना कि बहुत सारी चीजें ना सिमिलर आती थी. सो हम लोग दोनों के लिए सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट प्रिपेयर करते थे. सो अभी इस सेशन में हम लोग मेनली आईबीपीएस का देखने वाले हैं. सो फॉर आईबीपीएस कंटेंट क्या पढ़ना है? कंटेंट पढ़ने पर इस टाइम पे ओनली एंड ओनली करंट अफेयर्स. जो भी आएगा करंट अफेयर्स से आएगा. एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कम आते हैं, तो हम लोगों को अपना करंट अफेयर्स को ही डील करना है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है. सी, सीधे आते हैं. 2020-23 का है टॉपिक, 24 के भी टॉपिक्स हैं. सबसे लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी उनके बारे में, दे आर द लेटेस्ट वंस. सो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक जो हमसे पूछे गए थे वो थे डिजिटल इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, financial literacy and its importance in rural India, role of MSMEs in India's economic growth, cyber security challenges in digital banking, climate change and agriculture in India. What can you expect this year? इसमें से ना digital India will be highly important. Just impact on society की जगह पे it can ask you urban versus rural. See, something which is really very important, like look at the second one, financial literacy and its importance in rural areas. Always important because it is our like priority to work on rural areas as well, because वहाँ बहुत जरूरी है कि हम अवेयरनेस लेकर जाएं. जितने भी लोग हैं वो सतर्क हों, अवेयर हों, जानकार बने, नॉलेज लें. सावधान इंडिया नहीं बता रही हूँ मैं. ठीक है. रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज अगेन दिस टाइम इम्पोर्टेंट. और अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इस बार भी टॉपिक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारा जो टारगेट है, तो जैसे कि हम लोगों ने काफी बार बात किया है कि हम लाइक एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि इतने अंत तक हम इतना कमा लेंगे, हम इतने अपनी इकोनॉमी को बना लेंगे. दैट ऑल्सो यू कैन एक्सपेक्ट. cyber security challenges in digital banking, very important once again. So cyber security challenges, या फिर what are we doing to resolve, to tackle these problems, to stop, to prevent frauds or scams. What can we do? Climate change and agriculture in India, both are equally important. दोनों मिला के भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं. So I really liked इस वाले ईयर के टॉपिक जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे. वाई? बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. लाइक आप इनको यू कैन फाइंड देम एवरी ईयर.
हर साल आप इन टॉपिक्स को देख सकते हो और इन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस साल आपसे क्या पूछा जाने वाला है। अगर बात करते हैं आगे नेक्स्ट पे, before that I would love to tell you everyone that descriptive combo for IBPS PO 2025 is here. In just rupees 499 you can have the mock test plus video course. This is the best time. 20 sets of mocks you are going to get, plus you are going to get all the recorded sessions based on essay writing, comprehension, grammar, vocab, everything will be there. Use the code DESA DISC for descriptive and get extra 10% discount. Pros and cons of privatization in banking sector. So privatization काफी बार एक बहुत ही चर्चा का विषय बन जाता है, एक ऐसा डिबेट वाला टॉपिक हो जाता है जो काफी बार आपसे पूछा जाता है। तो जैसे हम बैंकिंग को लेकर आ रहे हैं, सिमिलरली हम और भी चीजों को प्राइवेटाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं। और काफी बार सुनने को मिलता है कि आगे जाने वाली चीजों में सरकारी नौकरी जैसा कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन पे आ जाएगा। So that is again a very important point. Say startups are quite promoted in India. आपको याद हो अगर तो अभी आपने देखा था इस साल की शुरुआत में that how Modi ji and how government rewarded the people who are trying to do something on social media, who are trying to earn, who are showing their talents. And there were many new people who we have never ever seen, and they are doing such a great job. They are providing services, or they are providing jobs to others. So that was quite respected. For that, it is again important. Global recession and its effect on India, again important. E-waste management, a global challenge. We can see many articles nowadays in newspaper जहाँ पर बहुत बात की जाती है, बहुत initiatives लिए जाते हैं, but still बहुत important है. Role of banks in financial inclusion. No, we should never write in points, Ashutosh. You need to write the introduction, but don't write introduction. Write what comes in introduction, then body paragraphs, and then conclusion. At the end of this class, I'm going to show you one amazing essay that will help you. Okay, so stay till the end of the class. Impact of digital banking on the Indian economy. भाई डिजिटल बैंकिंग इंडियन इकोनॉमी को भयंकर रूप से बना रहा है. यूपीआई is the most successful step that has ever been taken by any country that became this much popular, that what rural, what urban, what businessmen, what servicemen, everybody is using. So digital banking is definitely is something that is going to change the way we look at Indian economy. So it is definitely helping. Cashless India, again the same thing. Importance of renewable energy in India's growth. We mostly talk about this topic. If you see my videos, many times I take this example and I tell you how to write the intro, how to write the conclusion, because renewable energy is again something that countries talk about, quite curious to adopt new technologies, something that can help not only one country but also the world, because we all are having the crisis of fuel, right? Energy. Role of youth in nation building, always a hot topic. Artificial intelligence in banking, benefits and risks. And the topics like artificial intelligence, a boon or a bane. Be prepared for such topics. Yes, Lokesh, it is still available. Women empowerment in India, you can find this topic every second or every third year. It is always important. When I was preparing a long time ago, like a decade, more than a decade ago, it was important at that time as well. Challenges in India's healthcare system. Is technology a boon or bane for employment? Now, technology is mostly asked, it is replaced with AI or the artificial artificial intelligence tools, like any tool they mention, and then they ask the question. So yes, it is again very important. 2019 और 18 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो चेंज कर करके हर बार आ जाते हैं. Advantages and disadvantages of FDI in retail sector. Contribution of unorganized sector to the Indian economy. The future of Indian banking sector. The role of education in economic development and even online education is something जो कि काफी कोविड के बाद में पॉपुलर हो गया है. Impact of information technology on workplaces. Is India really for a cashless economy? See,
It was a question asked in 2018. Now, if you look at 2025, it has changed the way, right? So it was a question. Now we have all the information, all the examples about this. सो अगर मैं आपसे बात करूं रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स ओवर द ईयर क्या रहते हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए इन सब का अगर हम निचोड़ निकालें तो यहाँ से क्या निकल के आता है? कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये कॉमन थीम रहते हैं. Essays on privatization of bank, role of NABARD, impact of global economic policies, India's economy, ये कॉमन टॉपिक है. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, ये वो हैं जो हर साल आने की संभावना में रहते हैं. सो बैंकिंग एंड इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन like artificial intelligence, 5G technology, cryptocurrency, Bitcoin, cyber security, threats, frauds, etc. E-commerce और उसका impact of digital technologies on various industries. There are some social issues जो हमेशा हमें prepared रखने चाहिए. These are women empowerment, youth employment, education, and then topics like climate change, global warming, environmental sustainability are always important. If I talk about current affairs, then current affairs में आपसे जो भी currently popular है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो कुछ समय पहले हम लोग बात करते ब्रेक्सिट की, देन हम कोविड-19 के इम्पैक्ट की, अभी हम लोग बात कर रहे हैं टेरिफ्स की, यूएस की, चाइना की, रिलेशनशिप्स की, इंडिया किस तरीके से बढ़ रहा है इस चीज की. सो whatever is in trend that is important for you. एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की अगर मैं आपसे बात करूं, सॉरी इट शुड बी 25. हाँ, अगर मैं आपसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की बात करूं तो इस साल के एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कैन बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन, ऑन ग्रीन इकोनॉमी, हम बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल रिसोर्सेस की, ग्लोबल इवेंट्स, डिजिटल इंडिया, ये सब वो हैं जो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं. तो जो भी आपको न्यूज़पेपर में दिखेगा, जो भी आप मॉर्निंग की करंट अफेयर्स क्लास में पढ़ोगे, वो सब ही आपको ध्यान रखना है. As I told you at the end of the session, I'm going to show you one full essay. So this is the full essay. How you write an essay. Introduction में हम put करते हैं hook और thesis statement. Hook का मतलब जो हमारे आइडिया को स्टार्ट कर रहा है, thesis statement जिसमें उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल गिवन है. So our essay is on pros and cons of privatization in the banking sector. In recent years, the push for privatization in India's banking sector has gained momentum. Proponents argue, proponent का मतलब क्या होता है? Supporters. Opponents का मतलब जो oppose करते हैं. Proponents argue that it can revitalize, मतलब re-energize the economy by boosting efficiency and competition. Boost is increase करना. The debate, यहाँ से देखना, the debate over privatization has sparked varied opinions, necessitating a closer examination of its advantages and drawbacks. While privatization can lead to increased efficiency, innovation, and competitiveness in the banking sector, it also carries risks such as reduced job securities and a potential widening of financial inequality. Let's talk about the body paragraph. So first body paragraph में मैं बात करने वाली हूँ जो मैंने अपने intro में end किया, increased efficiency, साथ में कुछ details मुझे लगाने पड़ेंगे. One of the major benefits of privatization is enhanced efficiency. Private banks are now known for their streamlined operations, customer-centric approach, focusing on innovation, offering a variety of digital banking services. See, you guys are preparing for IBPS, SBI, but you all know when you go to the bank, what do you prefer? You never want to stand in the long queue. You don't want, that hassle banking that you see. You when you see the private banks like SDFC, like ICICI, you find them so easy, so accessible. You just go there and like all the people look at you. Yes, sir. May I help you, ma'am? Or like there is never a queue. So that is what I have highlighted here because I'm writing an essay and I can't be biased, but I need to write the positivity. So here I'm writing some positive things. For instance, private banks in India such as SDFC, ICICI have successfully embraced technology
to improve customer experience compared to some public sector banks. Additionally, privatization can encourage increased competition, driving better products and services at lower costs. My body paragraph number 2, where I'm going to talk about the negativity of this point. So let's talk about some negative factors. On the other hand, see, conjunctions are super important. At least 4 conjunctions should be there. 4 conjunctions should be there. यहाँ पे मैंने लिखा था additionally. मैंने क्या लिखा यहाँ पे additionally. मैंने यहाँ पे लिखा for instance. यहाँ मैंने लिखा on the other hand. अब आपने इसको contrast किया. Privatization possesses certain risks. A key concern is job insecurity for employees in public sector banks, as private entities often prioritize profits over job retention. Moreover, one more conjunction. Financial inclusion could worsen as privatized banks may not cater to rural or undeserved population, prioritizing urban profitable customers. The failure of Yes Bank highlighted potential dangers of private banking institutions when mismanaged. And it's time to conclude the essay because word limit को भी ध्यान में रखना है. I have used one more conjunction ultimately. While privatization in the banking sector can foster growth, innovation, and competition, it must be approached with caution. Ensuring regulatory oversight and social responsibility are vital to safeguarding the interest of employees and vulnerable customers alike. Always end your essay on a positive note. For that, striking a balance between between public welfare and economic growth will be key in determining the success of privatization efforts. So this is my essay and I hope it will help you a lot to find the way that how to start, how to write body paragraph and how to finish it. So once again a quick recap. हमने देखे कि हमें सोशल इश्यूज पर ऐसे मिलेगा, हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे टॉपिक्स पर ऐसे काफी मिलने की संभावना है. हमने देखा हमें टेक्निकल चीजों को थोड़ा सा पढ़ना है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस ऑल करंट अफेयर्स, नेवर एंडिंग करंट अफेयर्स, बिटर बट ट्रूथ, राइट? सो रिमेंबर इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है. प्लीज मेक अ गुड इंट्रो, then write 2 body paragraphs at least and conclude. Don't add anything new and end on a positive note. So this is my today's class for all of you. I hope you got the help from this session. To buy the IBPS PO batch, you can visit the application and you can have this. It is a combo for mock test plus video course. So I hope this session helped you, everyone, helps you. I'll see you all again in my next class. Till that time, bye-bye, take care, and keep studying hard, okay? Chalo. Take care, bye-bye, good night. Please take a class of RC, definitely, Suman. Suman, okay, but in paid batch as well, there will be a class, you will get it, that how to write the answers. Okay, I'll try to keep the next session on comprehension in next or next to next, okay? Right? Okay, thank you very much. Bye-bye. Good night. Okay, good night.